Hello everyone. Today we will be covering the newspaper for 9th of February 2025. So first of all हमने बजट में भी देखा important national mission on the manuscripts. 500 crore rupees fund has been allocated and it is basically under the national mission on manuscripts and under the Ministry of Culture. So the documents will be conserved and they will be digitized basically. No centralized library will be made under this mission. That can be a little confusing. Indira Gandhi National Center for the Arts. It will be basically functioning under IGNCA, but the new fund, it also aims to give it an operational independence. So the budget has been allocated of more than 80 crore rupees to the IGNCA, and it will also be overseeing this funding. So National Mission for Manuscript, it is basically will be digitizing 15 lakh of manuscripts, but India has over 1 crore manuscripts. So the new funding will be supporting the updating, documentation, then also conservation of these manuscripts. It will be first of all digitizing and then it will be also improving their accessibility to the general public and for research. So Gyan Bharatam mission, it is a part of national mission on manuscript जिसके अंदर जो कि एक separate initiative है जिसके अंदर ये सारी चीजें की जाएगी. So Culture Ministry, it will be setting up an expert committee also to determine the implementation structure. Why is it important? It is important because India has one of the world's largest collection of manuscripts in various languages. For example, Sanskrit, Tamil, Persian, Urdu. So many manuscripts are also facing deterioration due to poor preservation. So these challenges can be solved to an extent with the help of digitization, which is a time consuming and costly process, but it will be ensuring the accessibility and authenticity of the manuscripts. Then tribunal at the receiving end, criminal court, international criminal court की हम यहाँ पे basically बात कर रहे हैं, and the challenges it is facing. So on February 6th of 2025, former जो US president है Donald Trump, he basically imposed sanctions on ICC officials who are investigating alleged war crimes by the US and its allies. So the sanctions were also in response to ICC prosecutor Karim Khan's decision to issue an arrest warrant for the leaders, for example, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Defense Minister Yoav Gallant for the war crimes in Gaza. So the Trump administration had also previously sanctioned ICC prosecutor, but now they will be prosecutor Fatou Bensouda in 2020, who basically was investigating US actions in Afghanistan. So US does not recognize the ICC's jurisdiction, and basically it has also historically opposed the interference by ICC in the American military operations. So basically हम देख सकते हैं कि the challenges in implementation which ICC faces. So US, China, Russia and Israel, they do not recognize the authority of International Criminal Court. So basically they are having lack of enforcement powers, as many countries are not complying with its rulings. There is somewhat political bias also, as it is often seen as an instrument of Western interests. Then also targeting of only African leaders while being ineffective against the powerful nation, जैसे कि हम इस केस में भी देख रहे हैं. तो UN Security Council can refer the cases to ICC, but permanent members like the US, they can block such referrals also. So they are also having power at a larger stake. There are limited resources which can prevent the ICC from handling many cases efficiently. So International Criminal Court, it was basically established in 2002, and it basically it was established in 2002 to prosecute the individuals for crimes like war crimes, crimes against humanity, genocide. But the question arises that why is US opposing it?
So the US fears that ICC could be used against American military personnel and does not want an external body to be prosecuting its citizens. So geopolitical angle भी हम यहाँ पे देख सकते हैं ICC's investigation जब किया of Israel's action in Gaza. It has also angered the Western nations who see it, for example, as targeting their ally. सो इम्प्लीकेशन इसका यही होगा कि जो आईसीसी है उसका इफेक्टिवनेस लिमिटेड है. इट ऑल्सो रेजेस कंसर्न्स अबाउट वेदर जो इंटरनेशनल जस्टिस सिस्टम है इट इज ट्रूली इम्पार्शियल या फिर इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज पावरफुल नेशंस. So that becomes a major challenge for ICC. Now, freebies and welfare schemes, are they different? So ahead of elections, we saw major political parties, even including AAP, Congress, and BJP, who promised various material and financial benefits to the voters. For example, AAP ने pledge किया 2,100 monthly rupees for women, additional 2,000 rupees for pregnant women, and subsidized LPG cylinders. फिर बीजेपी ने प्रपोज किया 2,500 monthly rupees for women for from low income families. कांग्रेस ऑल्सो प्रॉमिस फाइनेंशियल इंसेंटिव. सो ये डिबेट उठाता है वेदर such direct benefits they constitute necessary welfare or they are just populist measures which will be creating more burden on the state's finances. क्या एक फ्रीबी जो है वो एक फॉर्म है ऑफ वेलफेयर ओनली? तो वेलफेयर स्कीम की जब हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, मिड डे मील्स जो कि एसेंशियल हैं टू प्रोवाइड दिस एसेंशियल सपोर्ट. बट कुछ लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं दैट कैश ट्रांसफर एंड सब्सिडीज दे लेजिटिमाइज द वेलफेयर मेजर्स दैट हेल्प द मार्जिनलाइज सेक्शन. सो अदर्स दे ऑल्सो बिलीव दैट to create a culture of dependency and basically encouraging fiscal irresponsibility. So fiscal risk of the freebies is also associated. The growing reliance है subsidies के ऊपर, it will be deepening the fiscal deficit basically. So FRBM Act also becomes important, that is fiscal responsibility and budget management, which basically uncheck the spending which states that unchecked spending जो है it can basically strain the state's finances. जैसे कि तमिलनाडु फ्रीबी मॉडल के केस में भी हमने देखा इट इज ऑल्सो डिबेटेड फॉर इट्स इफेक्टिवनेस वर्सेस द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जहाँ पे फ्री टीवी फ्री मिक्सर दिया जा रहा था लोगों को. सो लाइन कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, जुडिशरी का इसके अंदर क्या रोल है? तो अनप्रोडक्टिव कैश हैंड आउट विदाउट द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दे मे बी कंसिडर्ड फ्रीबीज. Essential subsidies जैसे कि फूड, हेल्थ, एजुकेशन, दे आर ब्रॉडली एक्सेप्टेड एज वेलफेयर स्कीम्स. सो सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईलाइट किया दैट देयर इज नीड फॉर अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज फ्रीबी एंड व्हाट इज वेलफेयर. So political manipulation also becomes important with the targeted voter base with the help of freebies. But we need to focus upon sustainable welfare, which in which we are investing in education, in healthcare, in employment opportunities, and it will be more sustainable than just providing a one-time gateway. So what will be the impact of Trump's trade war? Trade war, which is initiated by US President Donald Trump, which is focusing on the tariffs, imposing tariffs on the imports from China, Canada, and Mexico. And India will also be impacted as in a globalized world. Each and every country is connected and each and every country will be impacted. So Trump imposed tariffs on steel, that is 25%, on aluminium 10% from Canada, Mexico, and China, which is also raising national security concerns. So World Trade Organization and affected nations, they also oppose the tariffs, considering them violation of the free trade agreements. But Trump campaigned on protecting US manufacturing jobs from the foreign competition. There is also trade deficit. US has a massive trade deficit with China of more than $500 billion in imports versus $130 billion in exports. So national security argument may be claim किया गया that excessive reliance on the foreign steel and aluminium, it has weakened the US defense industries. So China also retaliated with tariffs on the US goods, for example, soya beans, automobiles, and electronics.
So Canada and Mexico, they also responded with their own tariffs on the US products, for example, dairy products and automotive parts. EU has also introduced some countermeasures, and basically experts and the analysts, and they are also fearing that the global economic slowdown is what it will result in, as the high tariffs, they raises the cost and it basically disrupts the whole supply chain. China has also filed a complaint with the WTO, and it has also imposed retaliatory tariffs. Canada also sought a trade exemption, but it later imposed countermeasures. तो NAFTA, that is North American Free Trade Agreement, यहाँ पे renegotiation की भी बात की जा रही है. They were also impacted, and it has also led to the creation of USMCA, that is United States, Mexico, and Canada Agreement. So long-term risk is me US economy could also suffer job losses in the industries which are reliant on Chinese imports. Companies can also shift their production outside US to avoid the tariffs, which will be hurting the domestic manufacturers, and trade war can also lead to inflationary pressure, which will be increasing the prices for the consumer. So शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट के साथ साथ यहाँ पे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी है, एंड ग्लोबल ट्रेड इंस्टेबिलिटी में भी ये रिजल्ट कर सकता है. Then heart failure patients in India, they die 10 years earlier. So heart failure patients 10 years earlier हम डेथ देख रहे हैं देन दोज इन हाई इनकम कंट्रीज. तो ऐसा क्यों है? इंडिया के अंदर नेशनल हार्ट फेलियर रजिस्ट्री भी है, जहाँ पे हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं. वी आर ऑल्सो एग्जामिनिंग पेशेंट्स ऑल अक्रॉस द स्टेट्स. So 25% of the heart failure patients, they die within a year of diagnosis. Rheumatic heart disease and congenital heart disease, they have high mortality rates as compared to the ischemic ischemic heart disease. So mortality rate in the low and middle income countries, LMICs, low and middle income countries, they including India, it is twice as high as those in the high income countries. तो क्या factors हैं that is resulting basically in such a trend? So it includes late diagnosis, lack of awareness among the citizens, limited access to healthcare facilities, high prevalence of the untreated underlying heart conditions. सोल्यूशन क्या हो सकते हैं कि हम अर्ली डिटेक्शन प्रोग्राम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेटर कार्डियक केयर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, हेल्थ के बारे में, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का जो लिंक है उसके बारे में हम अवेयरनेस फैला सकते हैं. हाउ स्ट्रेस इज इम्पैक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, तो हम योगा को प्रमोट कर सकते हैं, मेडिटेशन को प्रमोट कर सकते हैं. देन ऑल्सो इंक्रीज्ड अवेयरनेस कैंपेनिंग, जो कि बेसिकली प्रिवेंटेबल मेजर्स के अंदर आएगा. तो हार्ट हेल्थ के बारे में और अवेयरनेस हम क्रिएट कर सकते हैं, दैट व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड. देन टाइगर बोन ग्लू is one of the common and the most driving factor for the poachers in MP and Maharashtra. It is an illegal wildlife product which is leading to a rise in poaching cases basically. So tiger bone glue is made by pressure cooking the tiger bones for 2 or 3 days, and जो finished product है, it is basically a sticky sap-like substance which is sold in the form of cakes. Traditional medicine में use किया जाता है to cure muscle and bone ailments, and it basically increases vigor. So जो demand है, it is rising so rapidly that even illegal tiger farms in China, Vietnam, where it is called cow ho, and other parts of South Asia are also unable to meet the demand.
सो मेडिसिनल ग्लू की तरह ये काम करता है, हीलिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर जानी जाती है। ग्लिटेनियस सब्सटेंस बन जाता है। सो जॉइंट पेन, वाइटलिटी, उसको कम करने के लिए बेसिकली इसको यूज किया जाता है। तो ब्लैक मार्केट प्राइसेस जो है टाइगर पार्ट्स के लिए, इट हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, जो कि दिखाता है कि इलीगल ट्रेड ट्रेंड भी जो है वो अलाइन करता है उसके साथ, एंड इट इज ऑल्सो एक्टिव इन इंडिया। सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंसर्न्स भी ये रेज करता है। So wildlife crime control bureau is also there. It is also working to curb the trade, and intensified anti-poaching measures भी हम ले रहे हैं in the key tiger reserves. So impact on the tiger population क्या हुआ है? इंडिया के पास, इंडिया इज होम टू बेसिकली 70% ऑफ द वर्ल्ड्स टाइगर्स, वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन, एंड इलीगल पोचिंग की वजह से बहुत थ्रेट भी उस कंजर्वेशन एफर्ट में जा रहा है। तो स्ट्रिक्टर वाइड ट्रेड रेगुलेशन की हमें जरूरत है, बेटर मॉनिटरिंग हमें करनी चाहिए टाइगर हैबिटेट्स की, देन इंक्रीज पेनल्टी होनी चाहिए ऑन द पोचर्स एंड द इलीगल ट्रेडर्स। So traditional medicine industries, it is basically fueling the poaching even more. Then Mithuns get a glow up for road safety. So Mithun, जो कि अरुणाचल में यहाँ पे बात हो रही है, they are basically giving them fluorescent collars so that human animal conflict and जो road accident होते हैं उनको हम reduce कर पाए। क्योंकि जो मिथुन है दे बेसिकली स्टे इन फॉरेस्टेड एरियाज बट फ्रीक्वेंटली दे आर क्रॉसिंग हाईवेज विच ऑफन लीड्स टू कोलिजन्स विद द व्हीकल्स। सो डार्क कलर्ड होते हैं, इसलिए इस वजह से जब प्रॉपर लाइटिंग नहीं होती जिन जगह पे, दे आर डिफिकल्ट टू स्पॉट एट नाइट। सो 200 फ्लोरेसेंट कॉलर्स दिए गए मिथुन ओनर्स को, जो कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए। फ्लोरेसेंट जैकेट्स आर ऑल्सो बीइंग worn बाय द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ताकि उनकी भी सेफ्टी इंश्योर की जाए। एंड लोकल कम्युनिटीज एंड ऑफिशियल्स दे आर ऑल्सो कोलैबोरेटिंग टू इन टू बेसिकली इंक्रीज द सेफ्टी मेजर्स। So better visibility for the Mithuns at night, and it will be also protecting them from the road accidents and also the travelers, because the road accidents they also involve wild and domestic animals. It is a growing concern basically in the rural and the forested areas. So एक innovative and low cost effective solution हम बोल सकते हैं रोड सेफ्टी को इंक्रीज करने के लिए। एंड कैसे लोकल पार्टिसिपेशन भी जो है वो इंश्योर कर रहा है that the Mithuns are wearing the collars. So community involvement भी ये हमें दिखाता है। Then domestic interests, global cost. Hmm. So US Agency for International Development, USAID, it is basically facing massive funding cuts क्योंकि पॉलिसी शिफ्ट किया गया है अंडर द डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इट फ्रोज ऑल द फॉरेन एड फंडिंग फॉर 90 days, एंड USAID it basically shut down the programs in various countries जैसे कि सीरिया, थाईलैंड, यूक्रेन, देन ऑल्सो साउथ अफ्रीका। सो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के अंदर वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं डोमेस्टिक इंटरेस्ट को, एंड बेसिकली नॉट फॉरेन एड इज नॉट ऑन द फर्स्ट प्रायोरिटी। सो द स्टेट डिपार्टमेंट ऑल्सो criticized that US aid is ineffective in various aspects। इम्पैक्ट ग्लोबल एड प्रोग्राम्स के ऊपर आएगा डायरेक्टली, क्योंकि यूएस एड जो है वो एक की प्लेयर है इन द ग्लोबल हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर, ऑल्सो ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स ऑल्सो। जो कट्स हैं दे हैव आल्सो halted projects like malaria prevention, disaster relief, refugee support. Then 30 countries they have already felt the effects of reduced aid. So US aid budget cuts also reduces the US's soft power initiatives, and it will be influencing the and impacting the developing countries. So humanitarian concern भी है, डिजास्टर रिलीफ हेल्थ केयर प्रोग्राम्स है जो कि सपोर्ट करते हैं वेरियस मिलियंस ऑफ वल्नरेबल लोगों को। तो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन भी इसका होगा, वाइल रिड्यूसिंग द फॉरेन एड
it saves money, but it also creates diplomatic tension and it also weakens the US global leadership of the US. Then AI attackers. So जेंडर डिस्पैरिटी है सबसे पहले तो इन एआई ट्रैकर की बात करते हैं तो गवर्नमेंट स्टाफ जो है इट इज कॉशन्ड अगेंस्ट यूजिंग चैटबॉट, जो कि डीप सीक के केस में भी देखा गया। डेटा सिक्योरिटी को लेके, कॉन्फिडेंशियलिटी को लेके ऑफ द डेटा एंड द डॉक्यूमेंट्स। सो सेवरल कंट्रीज में हम देख रहे हैं डीप सीक को लेके ये कंसर्न भी उठ रहा है। पेरिस एआई एक्शन समिट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे पीएम मोदी विल ऑल्सो बी ट्रैवलिंग टू फ्रांस एंड ही विल बी को चेयरिंग द पेरिस एआई समिट। डिफरेंट ग्लोबल लीडर्स होके जो कि बात करेंगे कि कैसे और लिवरेज किया जा सकता है द पावर ऑफ एआई सिस्टम्स, वाइल जो रिस्क इम्पोज करता है साइबर सिक्योरिटी रिस्क है उसको भी डील किया जाएगा। ओपन सोर्स एआई systems, clean energy to power data centers, then the impact of AI on the labor, distributing the benefits of AI to the developing nations also, and then also promoting sovereignty in the global AI market. These will be the topics that will be prioritized. And AI safety summit भी है जो कि ऑलरेडी हुआ इन 2023 इन यूके। एंड फिर सियोल साउथ कोरिया में भी हमने देखा लास्ट ईयर 2024 के अंदर। सो बिलेचली declaration it also becomes important for AI safety, which was signed by 29 participating nations, जिसमें इंडिया, चाइना, यूएस भी इंक्लूडेड है। तो डिफरेंट एआई कंपनीज भी इमर्ज हो रही हैं। गूगल से भी हम जेमिनाई देखते हैं, ओपन एआई देखते हैं, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट। So it also becomes India to have its own sovereign AI chat GPT similar system, AI system. So that is basically what is important here. Then a promising heart patch. So stem cell therapy को use किया जाएगा basically to repair the heart, which could be a game changer, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि हार्ट डिजीजेस के पेशेंट भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो क्या हम स्टेम सेल्स को यूज कर सकते हैं? तो इट हैज आल्सो द रीसेंट रिसर्चेस दैट हैव आल्सो लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ हार्ट पैचेस दैट कैन बेसिकली रिपेयर द डैमेज्ड हार्ट टिश्यू। एंड ये जो पैचेस हैं दे आर क्रिएटेड बाय ग्रोइंग हार्ट मसल सेल्स फ्रॉम द स्टेम सेल्स इन अ लैबोरेटरी, जहाँ पे it is basically attached to the heart of the patient, and it can also give some time to the patient to delay the basically heart transplant सर्जरीज। अभी तक कोई साइड इफेक्ट हमने देखा नहीं है। क्या कोई ऑल्टरनेटिव भी है? क्या ये ऑल्टरनेटिव हो सकता है टू दी हार्ट ट्रांसप्लांट ऑल्सो? सो स्टेम सेल हार्ट पैचेस जो हैं दे ऑफर अ पोटेंशियल ऑल्टरनेटिव ऑल्सो टू हार्ट ट्रांसप्लांट फॉर सम पेशेंट, जिसमें जो डैमेज्ड हार्ट टिश्यूज को हम रिपेयर कर सकते हैं, हार्ट फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। बट क्या लॉन्ग टर्म में भी ये उतना ही वर्सेटाइल रहेगा? तो वो एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है, क्योंकि एक जब हार्ट ट्रांसप्लांट होता है तो इट प्रोवाइड्स अ कम्प्लीटली न्यू ऑर्गन टू द पेशेंट, वेयर एज जो पैचेस होते हैं दे वर्क बाय रीजनरेटिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द एग्जिस्टिंग टिश्यू ओनली। सो जो पेशेंट सीवियर इरिवर्सिबल हार्ट डैमेज से गुजर रहे हैं उनके लिए ट्रांसप्लांट ही एक सेफर ऑप्शन होगा। देन जेंडर डिवाइड, 41% internet penetration rate is for the adult women in developing countries. More than 300 million adult women in the developing countries are there who do not even own a mobile phone. So there is 23% gender gap in mobile ownership in South Asia. 13% gender gap in mobile ownership in sub-Saharan Africa. एसर दैट इज एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 से 24 के बीच में उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स हैं जो कि पब्लिश की हैं, जो कि जेंडर डिस्पैरिटी दिखाती है इन द डिजिटल एक्सेस पर्टिकुलरली इन इंडिया एंड आल्सो इन द डेवलपिंग नेशंस।
ये भी इन्होंने देखा दैट बॉयज हैव सिग्निफिकेंटली मोर एक्सेस टू स्मार्टफोन्स एंड द इंटरनेट देन गर्ल्स. In low income countries and developing countries, women have lower internet access and mobile ownership. And basically, 23% जेंडर गैप भी है इन मोबाइल एक्सेस इन दी साउथ एशिया. तो क्यों है ये गैप? अगर हम इसकी बात करें, सबसे पहला रीजन हम बोल सकते हैं कि सोशल नॉर्म्स है. कई बार हाउस होल्ड्स में बॉयज को प्रायोरिटाइज किया जाता है फॉर डिजिटल लर्निंग. इकोनॉमिक बैरियर है कहीं ना कहीं. बहुत फैमिलीज हैं रूरल इंडिया में या साउथ एशिया में जहाँ पे अफोर्डेबल डिवाइसेस ही नहीं है फॉर एवरी चिल्ड्रन. दैट ऑल्सो लीड्स टू अ कॉमन सेल फोन. देयर आर ऑल्सो सिक्योरिटी कंसर्न. सम पेरेंट्स ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट गर्ल्स, जिसमें हम बोल सकते हैं फ्रॉम यूजिंग स्मार्टफोन्स, क्योंकि कंसर्न देखे जाते हैं अबाउट देयर सेफ्टी एंड ऑनलाइन हरासमेंट ऑल्सो. So National Family Health Survey also, it also found that only 57% of the Indian women, they had access to the internet in 2021. So 57%, it is more than 50%. More government and private sector programs are needed ताकि इस डिजिटल डिवाइड के बीच में जो गैप है इसको हम ब्रिज कर पाए. लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज बिकम्स very serious क्योंकि equal access to the digital tool is very important. And government also must focus on affordable internet access. जो infrastructure है वो भी होना चाहिए for internet. Then next, so Finance Minister Nirmala Sitharaman, she stated that the government and the RBI will be coordinating their policies to boost the economic growth. And it was also highlighted in post budget meeting with the RBI officials. And the government's fiscal policy and RBI's monetary measures, they will be helping to improve the private investment and the consumption. So Sitaraman also, she, our finance minister also emphasized that जो growth cycle है, it is also strengthening and it is making it easier for the businesses to make investment decisions in India. For example, RBI has recently planned that it will be reducing the repo rate by 25 basis point to 6.25%. First cut देखा जाएगा in nearly 5 years. Inflation is expected to stay at 4.5% in financial year 25. Further interest rate reduction भी देखा जाएगा. तो RBI has projected a GDP growth rate of 6.7% for financial year 26. So the rupee's value is determined by the market forces, and then the central bank will also intervene only for long-term stability. So a 5% depreciation of rupee against the US dollar, it also impacts the domestic inflation. So government is also reviewing import tariffs and it is also ensuring कि India का जो manufacturing sector है, it also remains competitive. Then a vanished carnivore, it basically turned up in Egypt and how it was killed. So a spotted hyena, it is a species जिसको believe किया जाता है that it was extinct in Egypt for 5,000 years. And it was recently basically spotted and was killed in a remote Egyptian village. And spotted hyena are the largest of the four living hyena species which are found throughout the sub-Saharan Africa. Zoologists were also shocked by the discovery because the nearest known hyena population was 300 miles away in Sudan. So hyena also entered the village and it was killed by the villagers for safety concerns. And this is the first recording sighting of a spotted hyena in Egypt in millennia. दो बेसिकली हाइना स्पीशीज इजिप्ट के अंदर हैं. एक तो स्ट्रिप्ड हाइना एंड आर्ड वुल्फ. सो ये स्पॉटेड हाइना था which was considered extinct from 5,000 years.
हम्म। सो IUCN का इम्पोर्टेंट रोल आता है यहाँ पे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। एंड क्वेश्चन भी होता है अबाउट द कंजर्वेशन awareness among the citizens and the influence of the changing ecosystem that will also be allowing the hyenas to return to the regions where they were once extinct. So ये climate change का भी impact दिखाता है on the wildlife. Then next, the voices in the wilderness. So situation in 2024, BJP has been voted to power for the third time, but with a warning. So absolute majority nahi thi government mein, and it was the same situation that Narasimha Rao and Manmohan Singh faced in 1991. Hmm. So it is showcasing that how 2025 it mirrored 1991. Hmm. So BJP had sufficient number of members, but it did not have a absolute majority to form the government. So the government will not attempt to change the constitution. The government will govern by consensus. It will be addressing issues जैसे कि unemployment, poverty, inequality, inflation, farmers' distress, then also absent or broken infrastructure. It was the same situation which Narasimha Rao and Manmohan Singh faced in 1991 when Congress, FM, and PM he seized the opportunity and announced a path breaking reforms beginning from July 1st, 1991. जैसे कि devaluation, trade reforms, financial sector reforms, taxation reforms, and industrial policies also. So chief economic advisor survey also becomes important. जो economic survey है उन्होंने भी एक clear case made किया और for deregulation and reducing the government's interference, and ये भी highlight किया survey के अंदर जैसे कि there is need for economic reforms to unlock the growth potential, bureaucratic inefficiencies, and that can limit the entrepreneurship and job creation. Then there is urgency to remove the outdated regulation which hinders the industrial expansion also. So the budget है it also ignored these recommendation which led to the policy stagnation. So unemployment crisis को भी highlight किया गया जैसे कि periodic labor force survey 2023 से 24 के बीच में. So जो unemployment rate है it had declined by 3.2%. So which would be considered good in the economic theory, but real terms के अंदर जो economy है it needs basically 78 lakh new jobs per year to match the workforce growth, which is basically not at what extent that is happening right now. So the proportion of regular salary jobs it has basically declined with informal work rising, and the wage growth जो है it has also been stagnant, and the job losses in the formal employment sector they have increased. So structural issues हैं employment sector के अंदर, and then also manufacturing sector के अंदर भी जहाँ पे हाई प्रोफाइल कैंपेनिंग जैसे मेक इन इंडिया के बाद भी इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इट इज नॉट grown at a robust pace. So India's share at the global manufacturing level it is only 2.8%, and जो export है in the manufacturing sector it has declined from being 17% in 2011 to 12 to 14% in 2023 to 24.
बट द इम्पोर्ट्स दे रिमेन हाई, जो कि डिपेंडेंस ऑन फॉरेन गुड इंक्रीज करता है एंड इंडिया को और भी ज्यादा वल्नरेबल बनाता है टू द चेंजिंग प्राइसेस इन द करेंसीज and the tariffs. So government needs to focus more on deregulation, R&D, innovation instead of excessive bureaucratic control. So ये आर्गुमेंट बोला जा रहा है कि क्या 2025 एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. Unemployment remains a major challenge. India's growth story, it needs a manufacturing and innovation boom. Bureaucracy and over-regulation somewhere hinders the growth. So excessive regulation is a key bottleneck for the businesses also. So simplify करना चाहिए policies को. We should reduce red tape. Then also we should eliminate outdated laws. So we have completed for today. Thank you so much everyone for joining. Keep watching and keep learning with Ansarkari.